Am I audible now? Vipin? Okay. Good morning. So in last class, we were discussing about the socio-religious reform movement among the Muslims. Clear? And I have discussed with you the meaning of two keywords here. One was the revivalist movement, and the second is the reformist movement. We have already discussed the meaning of these two keywords. First is revivalist movement, and the second is the reformist movement. Revivalist and reformist movement, right? These are the two movements here, revivalist and reformist. Now, among these revivalist movement, there are some examples that I have already discussed with you. Okay, but here prelims questions are asked from these revivalist movement in the Muslim society. So you can write here that prelims questions are asked from this part. Prelims question. Reformist movement, so you can expect GS mains question as well as prelims question, right? Especially here Aligarh movement and Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan, this topic is important for prelims and mains both. But here, this part, this topic is important for prelims only. Clear? पहला part केवल और केवल prelims के लिए important है. So we need to know some facts. Clear? We need to know some facts that are important for prelims. The concept will be the common concept. For example, whatever the organization I will discuss here, the points will be the common. Okay, revivalism में क्या होगा? Agendas will be common. Okay, so the first was, read this, Wahhabi movement or Waliullah movement. This was the first. Wahhabi movement or Waliullah movement. Some facts here that are important to know. Wahhabi movement or Waliullah movement. Write some facts only facts. Clear? You need to know. Right, point one. Founder. Founder. Who is the founder? So write this, point one. Abdul Wahhab. Abdul Wahhab of Arabia and Abdul Wahhab and Shah Waliullah Dehlvi. Abdul Wahhab and Shah Waliullah Dehlvi. Shah Waliullah Dehlvi. ठीक है ना? तो देखो, from this word Wahhab word it is named Wahhabi movement. Clear? And this is what? Waliullah. So this is Waliullah movement. So these are the founders. Okay, Abdul Wahab and Shah Waliullah Dehlvi. Right, important name. Other important persons associated with this movement. Other important persons associated with this movement. In this way, the question are also asked that which important persons are associated with this movement. Names are important. So write next name. Next name is Sayyid Ahmad Barelvi. Sayyid Ahmad Barelvi. Sayyid Ahmad Barelvi. The next important name is Shah Abdul Aziz. Sayyid Ahmad Barelvi. The next is Shah Abdul Aziz. Okay, and there is another name that is called T2 Mir. T2 Mir. All these persons are associated with Wahhab movement or Waliullah movement. T2 Mir. Okay, T2 Mir. This is the nickname of that person, T2 Mir. इसी नाम से जाना जाता है. वैसे नाम था निसार अली, but he is known by the name of T2 Mir. Got it? So one question will be like this. Okay, which persons were associated with Wahhabi movement or Waliullah movement? जिसमें एक नाम क्या दे देंगे? सैयद अहमद खान. ऐसे आसान सा एक फैक्ट दे देंगे. So if you will able to eliminate some important facts, you can easily reach at the right answer. So this is the movement. Now what this is, what this ये किस category में? This is in the category of revivalist movement. So what will be the program of this organization? इस organization का program क्या होगा? You all know about this. Common point. क्या होगा program? Okay, promote, exactly, right? Revival of Islam, promoting teachings of Islam in its original form. वही सारी चीजें, ठीक है ना? तो कॉमन पॉइंट्स. तो अब इसमें कीवर्ड ये हो गया रिवाइवलिस्ट. अलग से नहीं याद करना है प्रोग्राम को. गॉट इट? नाउ दिस नेम्स आर इंपॉर्टेंट. नेम्स वी कैन फॉरगेट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. और ये मूवमेंट कब है पॉपुलर? 1830s to 60s.
अब यहाँ एक और बात आपको ध्यान रखना है, कैसे ये चीजें याद रहेंगी। अलीगढ़ मूवमेंट, व्हाट इज द ईयर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, क्या है? 1875। तो ये अलीगढ़ मूवमेंट से पहले का है या बाद का है? अलीगढ़ मूवमेंट से पहले का है। अच्छा बताओ कि वलीउल्लाह मूवमेंट और वहाबी मूवमेंट, इट विल मेक इस्लामिक सोसाइटी मोर प्रोग्रेसिव, यस और नो? नो। यहाँ पे जहाँ पे भी एजुकेशन को प्रमोट करने की बात आएगी, मेरी बात समझ गया ना, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को चैलेंज करने की बात आएगी, वहां पे मुस्लिम सोसाइटी ज्यादा प्रोग्रेसिव बनेगी। और वो कहाँ आएगा? अलीगढ़ मूवमेंट में, सर सैयद अहमद खान, राइट? सो दिस इज वन इंफॉर्मेशन, राइट? नेक्स्ट वन वी हैव डिस्कस्ड। नाउ नेक्स्ट, एंड दीज फैक्ट्स आर अवेलेबल इन ऑल द बुक्स, ठीक है ना? तो फैक्ट में करना ही क्या, बट वी हैव टू फोकस जहाँ पे फैक्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ है, राइट? नेक्स्ट इज द फरायजी मूवमेंट। फरायजी मूवमेंट, Farazi movement. This is also in the category of revivalist movement. And this 1830s to 50s. अब इससे एक और बात आपको पता चला, फराजी मूवमेंट कब है? बिफोर अलीगढ़ मूवमेंट और आफ्टर अलीगढ़ मूवमेंट? बिफोर अलीगढ़ मूवमेंट। तो ऐसे भी फैक्ट्स को याद रखना है, राइट? नाउ फाउंडर्स नेम, राइट? हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह is the name of the founder. फराजी मूवमेंट, हाजी शरीयतुल्लाह एंड दादू मियाँ, ठीक है? दादू मियाँ, दादू मियाँ, ठीक है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट फराजी मूवमेंट? इंपॉर्टेंट क्या है? तो देखो, इट्स नॉट अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, इट इज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, बट इट्स प्रोग्रेसिव इन नेचर। मेरी बात समझ गया ना? फराजी इज नॉट रिफॉर्मिस्ट, जिसको किस कैटेगरी में नहीं रखेंगे? रिफॉर्मिस्ट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, बट व्हाट, okay, it is still what, okay, progressive in nature. So write this, okay, this is very important note, write this important note, right? Faraji movement is in the group of revivalist movement, but Faraji movement is in the group of revivalist movement, it is it is, okay, progressive to some extent, but it is progressive to some extent, okay, it is progressive to some extent. Right? Example, it considers the idea of equality of all. Sab barabar hai, right? It considers the idea of equality of all. That is why it is important. Considers or accepts the idea of equality of all. Clear? So these two are important. Now we are coming to the third one. Third one is Darul Uloom Deoband. It is also known as Deoband School. Third is Darul Uloom Deoband. Darul Uloom Deoband, or this is also known as Deoband School. Deoband School. ठीक है? Year is what? Right? 1860s. 60s लिखो. Don't write the exact year. ठीक है ना? Exact year इसका नहीं पूछा जाएगा कि exact year केवल एक का याद रखना है. वो कौन सा है? अलीगढ़ मूवमेंट. ठीक है? सारा याद रखने लगोगे तो क्या होगा? जो exactly याद होना चाहिए वही भूल जाओगे. Right? तो this is what? 1860s. इतना. और 1860s क्यों लिख रहा है? अब इससे कुछ आइडिया लगा आपको? बिफोर अलीगढ़ मूवमेंट और आफ्टर अलीगढ़ मूवमेंट? बिफोर. अच्छा, दिस ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंटिन्यूड और इट विल स्टॉप? इट विल बी कंटिन्यू. ये कंटिन्यू भी होगा. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ राइट हियर important persons associated. Darul Uloom Deoband. Again, names are very important. Okay, so right. M.Q. Nanotwi and Rashid Ahmad Gangohi. These are the two most important. Okay. Muhammad Qasim Nanotwi, Muhammad Qasim Nanotwi, Muhammad Qasim Nanotwi, and Rashid Ahmad Gangohi, Rashid Ahmad Gangohi, Rashid Ahmad Gangohi, Muhammad Qasim Nanotwi and Rashid Ahmad Gangohi. Clear? Now, okay. ये किस कैटेगरी में है? Again in the category of revivalism, right? Another important name, Shibli Nomani. Shibli Nomani. And Shibli Nomani के आगे लिख लेना progressive outlook, and he was focused on the promotion of education. Shibli Nomani, progressive outlook, okay, focused on the promotion of education.
focused on the promotion of education. ठीक है, focus on the promotion of education. Now this name is important ना, focused on the promotion of education. एक और बात ध्यान रखना है, दारुल उलूम देवबंद, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट, रिवाइवलिस्ट. ये क्या है, रिवाइवलिस्ट. वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ दिस रिवाइवलिज्म, promoting the original teachings of Islam, pure teachings of Islam. यही होता है ना. So when Sir Syed Ahmad Khan will come with his progressive ideas, so obviously the ideas will come in conflict with the established beliefs and practices of Islam. Challenge तो करेंगे ना Syed Ahmad Khan, established practices and beliefs of Islam. When he will say that Western education for the women also, तो challenge तो हो गया. No पर्दा, challenge तो हो गया. Reinterpretation of Islamic teachings in a progressive manner, challenge तो हो गया. So what this Devband school will do, this will issue fatwa against, okay, Sir Syed Ahmad Khan. That is one of the most important things. So write this, that, okay, issued fatwa. Read this, Darul Uloom Devband, right? It issued fatwa. It issued fatwa. Darul Uloom Devband. It issued fatwa against the against Sir Syed Ahmad Khan. Issued fatwa against Sir Syed Ahmad Khan. Right? It issued fatwa against Sir Syed Ahmad Khan. ठीक है, फतवा अगेंस्ट सर सैयद अहमद खान. तो याद रखना है इसको, दारुल उलूम देवबंद इज अगेन व्हाट, अ रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. एक और क्लास में आपको बता रहा था मैं, क्लास में, राइट दिस, अहमदिया मूवमेंट. अहमदिया मूवमेंट. Ahmadiyya movement. This organization is in the form of movement also. Ahmadiyya movement. Ahmadiyya movement. And the year is 1880s. 1880s, 90s. Ahmadiyya movement. And write one point that, okay, it was particularly concentrated in the areas of Punjab. Particularly concentrated in the areas of Punjab. Okay. Mirza Ghulam Ahmad was the founder. Main person here is Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad was the founder. Ahmad से क्या हो गया, Ahmadiyya. Particularly concentrated in the areas of Punjab. Okay. Now, what is the next important point here? Okay, right. Okay. Belief in liberal policies, right? Believe in religious universalism. Believe in liberal policies. Believe in religious universalism. Believe in liberal policies. Believe in religious universalism. Right, next point. Supported or favored giving education including women. ठीक है ना, supported or it favored to give education including women. Women education देने की भी बात की. Okay, right, next point. Okay, rejected the idea of jihad. Rejected the idea of jihad and fatwa. Rejected the idea of jihad and fatwa. So it is what, a kind of progressive organization. ठीक है ना, अहमदिया मूवमेंट. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद इस बात को कहेंगे कि इस्लाम रिलीजन हैज नाउ बीन डिजेनरेटेड एंड गॉड हैज सेंट हिम टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन इस्लाम. तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मेरी बात समझ गया ना, ये क्लेम थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो उतना प्रोग्रेसिव नहीं. गॉड हैज सेंट हिम, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज होता है. दिस इज अहमदिया. बट द रियल चेंजेस, यस, जिहाद. देखो, जिहाद का कॉन्सेप्ट जो, दो मीनिंग है जिहाद का पूरे के पूरे इस फेज में. वन मीनिंग इज व्हाट, फ्रॉम medieval times, right, when the invasions will start, Muslim invasions will start. So this was a slogan that we have to convert land of non-believers of Islam into the land of believers of Islam.
देखो, previously what we see, many invaders came, the purpose was only plundering, but here the purpose of invasion is not only to plunder. The purpose is to plunder. The purpose is to gather the economic resources. With these economic resources, developing a powerful army, and with this powerful army, ruling the territory. And after ruling the territory, since the majority population was non-Hindus, so converting the land of non-believers of Islam into believers of Islam. ओके जैसे मेडिवल में मैंने आपको सिकंदर लोदी बताया था, फिरोज शाह तुगलक बताया था, तो पॉलिसीज वर लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं एक स्लोगन का वो पर्सपेक्टिव भी था। ओके, दारुल हर्ब इनटू दारुल इस्लाम। बट इसमें स्लोगन का एक और पर्सपेक्टिव है, जिहाद मीन्स वन मोर थिंग, अनदर इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ जिहाद, जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिहाद ऑफ मुस्लिम ग्रुप्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, आगे एक कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी, एक स्कॉलर है, स्कॉटिश हिस्टोरियन, एंड ही वाज अ सिविल सर्वेंट इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। ओके, तो गवर्नमेंट विल आस्क हिम टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट and write his opinion about what, that the Indian Muslims are still having the sense of jihad against the British rule in India। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिहाद का एक मतलब ये भी था कि when Indians are exploited by the British policies, economic policies, Muslims are exploited as well। ठीक है, तो मुस्लिम्स भी तो उस एक्सप्लॉयटेशन को अपोज करेंगे। तो जब मुस्लिम्स उस एक्सप्लॉयटेशन को अपोज करते हैं, तो उस लड़ाई को वो क्या नाम दे देते हैं? जिहाद का नाम देते हैं। तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजी हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू राजा, सिख राजा वॉज रणजीत सिंह, गॉट इट। सो इफ मुस्लिम ग्रुप्स कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद रणजीत सिंह, तो उस कॉन्फ्लिक्ट का नाम क्या दे देंगे? जिहाद। ठीक है, तो ये टर्म, जैसे मान लो कि इफ वेस्टर्न एजुकेशन इज बीइंग प्रमोटेड अमंग मुस्लिम गर्ल्स, एंड इफ यू वांट टू स्टॉप दैट, so that fight will be called jihad, कि jihad against western education। so jihad has a lot of meaning, got it, बहुत सारे मीनिंग है, बट तो ये बात समझ गया ना, दिस इज द मीनिंग। नाउ वी हैव लर्नड अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, बट आर दीज ऑर्गेनाइजेशंस able to bring substantial changes in the Muslim society, value based changes in the Muslim society? No, they are not able to do that. Now whose role will come? The role of Sir Syed Ahmad Khan will come, and this is what? Reformist. So whenever the question is asked reformist movement among the Muslims, so you will write about Aligarh movement and the efforts of Sir Syed Ahmad Khan। हमेशा याद रखना है, पहले फॉर्मेट को दिमाग में फिक्स करो, देन आंसर राइटिंग विल बी इजियर, क्योंकि आपको पूरा विजन क्लियर होगा ना कि रिफॉर्मिज्म पूछ रहा है तो हमें ये वाला एस्पेक्ट लिखना है। गॉट इट? ओके, नाउ we are going to discuss that reformist movement। reformist movement, I have already discussed the meaning of reformist movement with you। definition of reformist movement कौन define करेगा? बताइए, just give the definition of reformist movement। एग्जैक्टली, और बाकी लोग भी आंसर दिया करो। देखो, मेरी क्लास पढ़ाने का पर्पज यही है, ठीक है, कि डिस्कशन बेस्ड क्लासेस हो। ठीक है, तो आज जैसे जब मैं पूछूं तो ट्राई टू डिफाइन, ठीक है, बिकॉज दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस टू राइट ऑल्सो। लिखना वो आंसर राइटिंग चीज है, वो बात की चीज है, पहले बोलना सीखो, डिस्कोर्स करना सीखो, राइट। सो ब्रिंगिंग चेंजेस इन द फंडामेंटल स्ट्रक्चर और इन द existing structure, existing structure, bringing changes in the fundamental structure or the existing structure, यही तो सबसे बड़ी बात है। now what are the challenges in the fundamental structure, what are the challenges in the fundamental structure or existing structure of Muslim religion? We need to understand that what are the challenges in the fundamental structure or existing structure of Muslim society। कौन कौन से challenges है? now this is what, which century? This is 19th century। so just suggest me some points which were like the challenges in 19th century। उस मुस्लिम सोसाइटी में वो challenges थे। पहली challenge क्या थी कि there was, you can say that there was a
lack of rational outlook among Muslim community. ठीक है, rational outlook, use of reason, okay, ये सबसे बड़ा limitation था. So read this, lack of rational outlook, lack of rational outlook, okay, lack of rational outlook. It means use of reason was not promoted. Use of reason was not promoted. That lack of rational outlook. Use of reason was not promoted. Use of reason को कैसे promote कर पाओगे? How will you able to promote reuse of reason? By education. Education देके ही तो promote कर पाओगे. तो एक तो challenge ये है rational outlook वाला. अच्छा, इस rational outlook की वजह से, lack of rational outlook की वजह से क्या होगा? Read this. Okay. Belief in okay, Quranic practices, belief in Quranic practices, belief in Quranic practices, okay. और ये belief भी गलत नहीं है, but इसमें भी क्या है? Belief in Quranic practices, and what is the most important point here? Again, जो हिंदू सोसाइटी वाली प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम यहाँ पे है. प्रॉब्लम क्या है? मिस इंटरप्रिटेशन. क्योंकि हम कुरानिक टीचिंग्स को रॉन्ग नहीं कह सकते. मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरानिक टीचिंग्स. तो प्रॉब्लम क्या थी? कि द पीपल वर बिलीविंग द मिस इंटरप्रिटेशंस. The people were believing the misinterpretations. Clear? And when the people will believe in misinterpretations, so what will happen? Orthodoxy and superstitions will be promoted or not? Yes or not? Yes. Orthodoxy and superstitions will be promoted. Okay. जो customary laws and practices हैं, customary laws and practices हैं, okay, the people will follow as it is. As it is. ठीक है. Customary laws and practices, the people will follow as it is. So here, if anything is regressive, the people are not ready to reject it or discard it. If anything is regressive, the people are not ready to reject it. इसको लोग reject नहीं करना चाहते हैं. Got it? And due to this reason, many evils have become part of Islamic society. For example, one evil was पर्दा system. एक evil क्या है? पर्दा system. One evil is what? पर्दा system. Okay, this is one of the evil. Subordination of women, obviously. Okay, polygamy. It was also in Muslim society. Muslim society में भी polygamy. पर्दा system was there. Subordination of women. Okay, women were not given equal rights to education. The things like triple talaq, ये भी थी. Okay, पर्दा system, polygamy, subordination of women, the things like triple talaq. Okay, all these problems are present in Islamic society. Okay, and the people believe that these are pure teachings of Islam. Are they pure teachings of Islam? Yes or no? No. Okay, religion will teach about love for humanity. This is the basic teaching in the religion. Clear? So this is the problem. Okay, and the people, this will promote what? Religious bigotry, religious fanaticism, religious bigotry, and religious fanaticism. Religious fanaticism. This will promote religious bigotry and religious fanaticism. It means it will promote what? Radical outlook. It will make Islamic religion more radical religion. More radical religion. Orthodoxy will be a part of it. And the people believe that this is the original Islam. Okay? The people believe that this is the original Islam. Okay? Suppose any family advocates to give education to its daughter. Okay? So the people will not consider good. There are chances that fatwas will be, okay, criticism, fatwa, ये जारी होगा उस family के खिलाफ. So because they will say that you are compromising with the original teachings of Islam. Now this is questioned by Sir Sayyid Ahmad Khan, that what are you saying?
what you consider is the original teachings of Islam, basically they are not the original teachings of Islam. Okay, we have to do what? Write critical commentary on Quran. We have to do reinterpretation of the teachings of Quran. अब हमें उसको reinterpret करने की जरूरत है, धर्म की नए सिरे से व्याख्या करने की जरूरत है. Now this is the time that we should do what? Reinterpretation of the teachings of Quran, and this will make our society more progressive. This will, okay, be able to end all these kind of discrimination. इससे सारे discrimination खत्म हो. This is the idea of Sir Syed Ahmad Khan. Now Sir Syed Ahmad Khan says that, Sir Syed Ahmad Khan says that we need to do what? Reinterpretation. Redo reinterpretation of Islamic teachings. Reinterpretation of Islamic teachings. Reinterpretation of what is written in Quran. Okay, Quranic teachings. Reinterpretation. And this reinterpretation is should be done in a progressive manner. ये reinterpretation कैसा होना चाहिए? Progressive manner. Now what will happen? The fundamentalists, they will do what? Okay, they will declare fatwa against Sir Syed Ahmad Khan कि आप हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ मत करो. They need what? Status quo. याद आया धर्म सभा, ब्रह्म समाज, another organization धर्म सभा. They demanded status quo. So what revivalist organization will demand? Status quo. कोई इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं. And what Sir Syed Ahmad Khan is saying that if you do reinterpretation means what? Rational outlook. It means what? Use of reason. Reinterpretation is rational outlook, use of reason. And Sir Syed Ahmad Khan will do what? Will discard. He will do what? He will discard all the socio-religious evils in Muslim society. He will discard all the socio-religious evils. Parda system, he will discard. Polygamy, he will discard. Triple talaq, he will discard. He will discard everything. He will discard all the socio-religious evils that were present in the Muslim society. And he will say that, okay, we need to promote education. We need to promote education among the Muslim youth, okay, including women. We need to promote education among the Muslim youth, including women. And this education should be what? This education should be Western education. ये education क्या होना चाहिए? This education should be Western education. We need to promote education among the Muslim youth, among the women also, and this education should be Western education. Okay, got it? And why he is saying this? There is a reason behind this. First, I will discuss some facts, then I will enter into that debate. And for that purpose, write a fact. Okay, for that purpose, in 1875, for the purpose of promoting education among the Muslims, in Aligarh, Mohammedan Anglo-Oriental College and School and College, read this, Mohammedan Anglo-Oriental School and College was set up in Aligarh, Mohammedan Anglo-Oriental College or School was set up in Aligarh. Year was 1875. Clear? Year was 1875. And the same Mohammedan Anglo-Oriental School and College will later develop into Aligarh Muslim University, AMU. In which year? 1920. Got it? Central Hindu School and College in Banaras, later 1960, BH. वैसे ये क्या है? Mohammedan Anglo-Oriental School and College in Aligarh, and this is what? Aligarh Muslim University. Now, this college is what? This school or college is a symbol. 1875, the school was set up, and this school or college was a symbol. This was a symbol of Muslim Renaissance. This was a symbol of Muslim Renaissance or Renaissance during Renaissance in Muslim society. This was a symbol of Renaissance. Why it was a symbol of Renaissance? Because here, what is the most important feature, key feature, that is promotion of education, scientific education, Western education.
English education, Western art and sciences. Write this. Western art and sciences. English education, Western art and sciences, English education. All these are being promoted here, right? Scientific and technological knowledge, scientific and technological knowledge, education for women also. Okay, they will also get this Western education. Okay, and this education is capable of bringing social and cultural revival. Social and cultural revival. Because education will do what? Education will promote use of reason and rational thinking. Clear? Education will promote use of reason and rational thinking. और use of reason और rational thinking की वजह से the evils will be discarded by itself. बुराइयां तो अपने आप खत्म हो जाएंगी. Got it? The evils will be discarded by itself. बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी. Okay? Evils will be discarded by itself. So this is the point here. So that become a symbol. Okay? This institution become a symbol of Renaissance in the Muslim society. It became a symbol for cultural and social revival in the Muslim society. The reforms will start. And what is the year? 1875. Now tell me, there is a time lag of how many years between Hindu society reform and Muslim society reform? Hindu society reform beginning is 1828 and Muslim society reform beginning is what? 1875. So there is a time lag of almost how many years? 50 years. 50 years. Now I am going to discuss with you one very important concept जिसको ध्यान से समझना है and definitely UPSC will someday ask question from this concept. अब वो सर सैयद अहमद खान से क्वेश्चन पूछेंगे तो ये नहीं पूछेंगे discuss about अलीगढ़ movement. No, they will correlate two topics looking at the current trend. So that I am going to discuss with you the very important concept. Okay, now I am going to discuss with you that, okay, Sir Syed Ahmad Khan, about his personality, some of the important details and okay concepts about Sir Syed Ahmad Khan. ठीक है, पहली चीज क्या है? Read this. Okay, Sir Syed Ahmad Khan, right? Served DIC, served DIC, EIC में नौकरी की थी Sir Syed Ahmad Khan, right? From 1828 itself, he was serving East India Company. From 1828 itself, he was serving East India Company, right? Okay. He also served as a judge in some cases. Okay. He also served as a judge in some cases. He also became a member of Legislative Assembly representing minority groups. Member of Legislative Assembly. Okay. And British government had also awarded him with the title of knighthood. Knighthood. Okay. In 1888, British government had also awarded him with the title of knighthood in 1888. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में नहीं पूछे जाए. मैंने क्यों बताया? क्योंकि सर सैयद अहमद खान वाज सर्विंग कंपनी, कंपनी की नौकरी कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कर रहे थे. और नौकरी क्यों कर रहे थे? बिकॉज ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन, दैट्स वाई ही वॉज सर्विंग ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. And now what is the problem that he sees? देखो problem क्या है? Problem is, one is ancient India, then we see medieval India, and then we see 1757 onwards. Here is what? Modern India. यहाँ पे क्या है? Modern India. ध्यान से समझना, एक एक बात जो आज बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे आपको कम्युनलिज्म को समझना बड़ा आसान हो. This is modern India. Now what is the thing here? In medieval India, which class was the ruling class? बताओ. रूलिंग क्लास कौन सा क्लास था? मुस्लिम. मुस्लिम्स वेर द रूलिंग क्लास. हु वेर द important nobility class? Muslims. Important nobility class were the Muslims, right? Muslims. Hindu rulers भी थे, but there was Muslim rule in India. There was Muslim rule in India. Muslims were important nobility class. Muslims were important ruling class.
एडमिनिस्ट्रेशन में भी किसका दबदबा था? Was the most dominant when we talk about the administration? Muslims. Okay, so Muslim were also elite class and administrative class. Muslims were also elite class and administrative class. ये बात आपको समझ में आई? Others are also there. I am not universalizing the concept, but still Muslims were dominating. When British rule will establish in India, now you all know the story. तो यहाँ पे क्या होगा? Okay, Mughal rule, or you can say that Muslim nobility class, Muslim nobility class will be replaced by which class? British elite class. Elite class होगा कि नहीं बताओ? यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जहां पे पहले मुस्लिम्स ओके प्रोमिनेंट रोल में थे, नाउ द रोल इज चेंज्ड. नाउ हु इज इन प्रोमिनेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन? Muslims are in prominent role, sorry, British are in prominent role in administrations. So can we say that the British class replaced Muslims as an administrative class? Yes or no? Can we say this? एक simple understanding है. So write this point that we see here that in modern India, write this, in modern India, the British elite class, the British elite class replaced Muslims class, the class of Muslims, British elite class replaced the class of Muslims in administration. In administration, ठीक है ना? Administration में इनको replace कर दिया. They replaced the class of Muslims in administration. Got it? Muslims की class को replace कर दिया. अब दूसरी important बात क्या है? Okay, one administrative class replaced by another administrative class. तो इससे क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी, unemployment. Obviously, unemployment among Muslims will increase. Okay, so write this. Unemployment among Muslims will increase. Unemployment among Muslims will increase. Okay, unemployment among Muslims will increase. Now the new rule is British rule. And due to their outlook, Muslims are not adopting Western education. Western education के खिलाफ तो फतवा जारी कर दे रहा है. So they are not taking Western education. And if you are not taking Western education, okay, will you get job opportunities in British period? Yes or no? नहीं. अगर सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजी नहीं आती तो वो काहे का जज बनते? कंपनी की सर्विस में कैसे रहते? So he was knowing that if I am knowing English, if I am familiar with the Western knowledge, so I am getting job and services in British India, British Indian company, administration. ये बात आपको ध्यान से समझनी है. तो write this point that due to their traditional outlook of neglecting, due to their traditional outlook of neglecting Western knowledge, English, Western knowledge, science, due to their traditional outlook of neglecting English knowledge, okay, Western sciences, the Muslims were lagging behind. Muslims were lagging behind. And we can say that they were not fit for new administrative services. Muslims were lagging behind. They were not fit for new administrative services. They were not fit for new administrative services. ठीक है. If you will not upgrade your skill, what will happen? अब आप फारसी बोलोगे तो थोड़ी ना ईस्ट इंडिया कंपनी आपको अपनी सर्विस में ले लेगी. नहीं. ठीक है, फारसी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखो. So you will not upgrade the skills, what will happen? Clear? So they were not upgrading their skills due to their traditional outlook. So that's why they were lagging behind. ठीक है? They were lagging behind. And the one more thing, okay, एक दूसरी चीज है. The revivalist movements are doing what? They are causing more harm to the Muslim society because they want to bring back the pure form of Islam. Okay, so right, next point that revivalist movements, और ये पहले है कि नहीं बताओ? 1830s, 60s, 1850s पढ़ा ना हमने? So right, this revivalist movements were causing
another harm to the Muslim society. Revivalist movements were causing another harm to the Muslim society. Another harm to the Muslim society because another harm to the Muslim society because they were trying to bring back because they were trying to the bring back the bring back Islam in its original form, you can say pure form or earliest form. Okay, तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इस्लाम को वो रिवाइव करना चाह रहे थे, ये प्रॉब्लम था. तो दे आर डूइंग अनदर हार्म. और सर सैयद अहमद खान वाज एनालाइजिंग एवरीथिंग, सब सब कुछ एनालाइज कर रहे थे. ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट कब है? 1875 में. ठीक है, और दूसरी चीज सर सैयद अहमद खान क्या देख रहे हैं? ठीक है, देखो, आई एम अगेन ड्रॉ दिस स्केच ऑल्सो इन योर नोट्स, तो आप रिलेट कर पाओगे. ब्रह्म समाज एंड राइट हियर 1875 अलीगढ़ मूवमेंट. गॉट इट? 1828 में क्या है? ब्रह्म समाज. दिस इज अलीगढ़ मूवमेंट. ये फेज है. नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट एंड दैट इवेंट इज राइट हियर, रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 जो मैं बता रहा हूं वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवोल्ट ऑफ 1857. ब्रह्म समाज इज व्हाट? It is an indication that reforms in Hindu society has started. Reforms in Hindu society has started. Aligarh movement is the symbol that from here reforms in Muslim society will start. So there is a gap of almost 50 years. This is a gap or time lag of almost 50 years. ये पूरा टाइम लैग कितना है? 50 years का. कॉम्युनलिज्म, पार्टीशन, नेशनल मूवमेंट कभी इससे जुड़ा हुआ ऐसे आए तो बी रेडी टू राइट. ठीक है, ऐसा ऐसे जिसमें आप जीएस के पेपर्स का रिफ्लेक्शन, मेरी बात समझिए ना, डाल सकते हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, एंड आई विल स्टार्ट ऐसे डिस्कशन फ्रॉम दिस संडे, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा. आई विल चूज फर्स्ट दोज टॉपिक्स वेयर यू आर गोइंग टू यूज द नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज. ठीक है ना, वहीं से स्टार्ट करना है. तो अब देखो क्या होगा. एक और मेंटालिटी होती है. वो मेंटालिटी क्या होती है? जैसे इफ ब्रिटिश विल रिप्लेस मुस्लिम क्लास एज द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, तो उनके अंदर एक टेंडेंसी होगी ब्रिटिश के अंदर, और वो टेंडेंसी क्या होगी? सप्रेसिंग मुस्लिम्स. नहीं तो दोबारा सर उठाओगे. मेरी बात ध्यान से समझना. अगर अपने गांव के आप जमींदार हो और मैं जाके आपके गांव में जमींदार बन जाऊं जबरदस्ती, तो मेरी कोशिश क्या होगी? पुराने जमींदार को दबा के रखना, सप्रेस करना, या उसको गांव से बाहर भगा देना. मेरी बात समझ गया ना? तो ये टेंडेंसी भी तो काम करेगी दैट इफ ब्रिटिश कंपनी हैज रिप्लेस्ड मुस्लिम्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, सो देयर इज अ जनरल टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन ऑफ मुस्लिम्स. जानबूझ के उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं लेना, जिससे कि वो क्या हो जाए? गरीब रहे, वीक रहे. जब वो वीकर रहेंगे सो दे विल नॉट रेज देयर हैंड्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. क्योंकि तात्कालिक नुकसान किसका हुआ था? मुस्लिम्स का ही तो हुआ था ना. मुस्लिम रूल वाज रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश रूल, तो नुकसान तो उन्हीं को हुआ था. ओके, सो इन दिस phase what we see that, write this point, that the British, write this, the company government, the company government, okay, had a general tendency, had a general tendency of separation of, company government had a general tendency of separation of Muslims in India. Separation of Muslims in India एक जनरल टेंडेंसी भी थी. जनरल टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, बिकॉज द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिप्लेस्ड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, or the Muslim administration. So it has a general tendency of separation of Muslims in India. General tendency of separation of Muslims in India because company has replaced Muslim rule. So it has a general tendency of separation of Muslims in India. Now in this phase, if
education will be promoted among Hindus, and Hindus will get English education, scientific education. So what will happen? They have upgraded their skills. Now in companies administration, who will get more opportunities, Hindus or Muslims? Muslims को नुकसान हो रहा है कि they are not upgrading their skills, plus the government is having okay a kind of tendency of suppression towards the Muslims. तो उनको नुकसान हो रहा है. मुस्लिम हिंदू को क्या फायदा है? Read this point one. Okay, हिंदू रिफॉर्म से क्या होगा? Read this skill upgradation. Skill upgradation. It means majority of Hindus will be fit to be part of administrative services. Administrative services, subordinate administrative services. Superior offices were always occupied by the British. So majority of the Hindus were fit for the job. Were fit for the job. ठीक है? So their participation is increasing, and about Muslims participation in jobs and employment, this is decrease. ये decrease हो रहा है और ये सब हो रहा है. And who is analyzing each and everything? Sir Syed Ahmad Khan. सब देख. Now what happens here? Revolt of 1847. यहाँ पे होता है रिवोल्ट ऑफ 1847. आई एम डिस्कसिंग विद यू जिस्ट ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट बुक्स. ठीक है ना, बुक आपको पढ़ना नहीं है, वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ. जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही स्टैब्लिश्ड हिस्टोरियंस का ओपिनियन है, मेरा नहीं. ठीक है, मुझे तो हिस्ट्री आती ही नहीं, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, तो ये अच्छी बात है, याद रखना इसको. नाउ रिवोल्ट ऑफ 1847 क्या होता है यहाँ देखो. वी विल डिस्कस दिस चैप्टर लेटर, बट इतना तो पता है that this revolt was lastly okay not successful in realizing its objective. And what was the objective of this revolt? इस revolt का objective क्या था, कोई बता सकता है आप में से? अब दूसरे लोग भी बताया करो. ठीक है, क्या था objective? विपिन को छोड़ के कौन बताएगा? Yes, exactly, to restore Mughal power in India. Okay, so write this. Objective was to restore Mughal power in India. To restore Mughal power in India. And Mughal power is Hindu rule or Muslim rule? Muslim rule. ऑब्जेक्टिव तो यही था. अंग्रेज इसीलिए सप्रेस करके रखते थे कि दोबारा सर उठाने की कोशिश करेंगे. द सेम हैपेंड हियर. ऑब्जेक्टिव यही है, टू रिस्टोर मुगल पावर इन इंडिया. नाउ ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग दिस रिवोल्ट. वी ऑल नो दिस. रेड दिस. ब्रिटिश successfully suppressed this revolt. British were successful in suppressing this revolt. British were successful in suppressing this revolt. इस रिवोल्ट को क्या किया? सप्रेस कर दिया. एंड आफ्टर दिस ब्रिटिश विल डू व्हाट? ओके, ब्रिटिश बहुत चालाक है. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कैसे यूज करते हैं देखो. दिस रिवोल्ट वाज ओके, राइट दिस. हिंदू मुस्लिम यूनिटी. हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज a remarkable feature of this revolt. Most unique. Hindu Muslim unity was the most unique and remarkable feature of this revolt. Hindu Muslim unity was the most unique and remarkable feature of this revolt. बताओ, हिंदू सिपाही पहुंच गए लाल किला और बहादुर शाह जफर को कहा कि हम आपको रूलर बनाना चाहते हैं. ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? क्लियर? So this revolt, what we see that Hindu Muslim unity was one of the most remarkable feature. And British fear from the unity of Indians. Unity से उनको डर लगता है, because unity will give an idea or sense of oneness, and this is nationalism. और जब nationalism आ जाएगा तो colonialism उसके सामने टिक नहीं पाएगा. So British knew this, that ये क्या था, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, Hindu Muslim unity. So after this revolt, read this, British will use their policy of divide and rule. To break this Hindu Muslim unity, British will use their policy of divide and rule. To break this unity, British will use this policy of divide and rule. And how they are going to use this policy of divide and rule, this is also very interesting. ठीक है, divide and rule की policy वो क्या है? Right, selective administrative action. Selective administrative action. Selective administrative action. This is the keyword. And what is selective administrative action? This is also very interesting. देखो,
selective administrative action. Suppose we all have participated in a revolt. मान लो हम सबने revolt में participate किया. We all are united for a cause. Then after this revolt fails, the British will suppress and they will start punishing those people who were responsible for this revolt. And British will consider Muslims. They will say that Muslim conspiracy. This revolt is due to which conspiracy? Muslim conspiracy. Suppose half of us are Hindus and half of us are Muslims, but all have participated in a revolt. Example hai. Now British policy is saying who is largely responsible? Muslims are responsible. Now suppose 20 to 30 students out of you are Muslims. British police authorities will come, they will arrest you, they will beat you, they will torture you, considering you are responsible for revolt of 1857. ठीक है, हिंदूज को भी पनिश किया, बट एक मैसेज दिया सोसाइटी को कि हमें ये लग रहा है कि इस रिवोल्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मुस्लिम. तो लार्जर एग्जीक्यूशन किसका होगा? मुस्लिम्स का. मान लो हम सब एक ही कॉलोनी में रहते हैं, ब्रिटिश पुलिस आई और मुस्लिम यूथ को उठा के ले गई, बेटा तुम थे रिवोल्ट में, चलो आज तुम्हारी पिटाई होगी. ट्रक में भर के ले जा रहा है. और सपोज देयर आर अदर यूथ हु आर द हिंदू यूथ. उन्होंने क्या सोचा, अच्छा हुआ इनको हमारे बारे में पता नहीं चला, सीसीटीवी कैमरा तो थे नहीं उस समय. अब बाकी लोग ये सोच के खुश हो रहे हैं कि गए तो हम भी थे लेकिन इनको हमारे बारे में पता नहीं चला, अच्छा हुआ हम बच गए. यही तो वो चाहते थे. जब आप ये सोच के खुश हो गए कि अच्छा हुआ हम बच गए, हमारे बारे में पता नहीं चला, तो जिनको वो अरेस्ट करके ले गए वो क्या कहेंगे? साहब हम नहीं थे, केवल हम नहीं थे, वो भी थे. यही कहेंगे ना. दूसरा स्टेप उनका क्या कहना होगा? आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे. अंग्रेज समझाए कि देख लिए ना, थे वो भी, आए तुम्हारे सपोर्ट में. ठीक है. तो ये है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. whenever any government does this, right, if any selective administrative action is being taken, it means that this is the policy of divide and rule. ये भी हमने सीख लिया किससे? अंग्रेजों से. बहुत कुछ सीखा है. अंग्रेज अगर 100-200 साल और रूल करते ना तो और भी बहुत कुछ सिखा के जाते. ठीक है. ओके. So this is selective administrative action. So read this. Okay. Muslims were considered largely responsible for Muslims were considered largely responsible for revolt of 1857. I have used their word, this word largely. Controversy नहीं करना है. हिंदूज को भी पनिश किया था, ठीक है, बट यहाँ एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं. Muslims were considered largely responsible for the revolt of 1857. Clear? So read this. The British, ये तो लिख लिया ना. और selective administrative action, that Muslim youths were arrested. Charges were framed against them. Charges were framed against them. Charges were framed against them. ठीक है. ठीक है. largely वर्ड को हाईलाइट कर लेना. हिंदूज का भी एग्जीक्यूशन हुआ था, ठीक है, बट यहाँ पे एक मैसेज देना था गवर्नमेंट को. ठीक है. गवर्नमेंट मैसेज आसानी से दे देती है. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने वो मैसेज दे दिया सोसाइटी को कि भाई हम किसको रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं? मुस्लिम्स को. अब आप बताओ, आफ्टर 1857 जो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी थी जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट में, वो भी खत्म हो जाएगी कि नहीं? विल ब्रिटिश गिव यू द अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट? नो. ओके. सो read this. This event had again adversely affected this event. What did it adversely affected? The participation of Muslims in jobs and employment. Adversely affected the participation of Muslims in jobs and employment. Job opportunities adversely affected the job opportunities for Muslims. Crime. मेरी बात समझ गए? This is one part. Got it? Now we are coming to the next part. Again, who is observing each and everything? Sir Sayyid Ahmad Khan. Now he realizes कि अब कुछ नहीं बोला, ठीक है, अगर मैंने, तो फिर ये अच्छी बात नहीं. Now what will happen? Now Sir Sayyid Ahmad Khan, read this. Sir Sayyid Ahmad Khan, okay, will write a book in year 1850. And books are what? Books are the reflections of our thought.
ओके, और बुक का ईयर क्या है? 1859। तो ये ध्यान में रखना है, सैयद अहमद खान रोट अ बुक इन द ईयर 1859। ओके, 1859। और इस बुक का नाम क्या था? द नेम ऑफ दिस बुक वाज, राइट, इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, हाईलाइट कर लेना इसको, असबाब ए बगावत ए हिंद। दिस इज द नेम ऑफ द बुक, असबाब ए बगावत ए हिंद। दिस इज द नेम ऑफ द बुक, असबाब ए बगावत ए, असबाब ए बगावत ए हिंद। दिस इज द नेम ऑफ द बुक। असबाब मीन्स स्टोरी, okay. Asbab also means reason, or Bagawat means revolt, and Bagawat Hind, it is indicating what? Revolt of 1857. So what is the meaning of this book? Asbab e Bagawat of a Hind, that is story of revolt of 1857, reason of revolt of 1857. Story of reason of revolt of 1857. Sayyid Ahmad Khan wrote this book. First he wrote this book in Urdu, and later it was translated into English. First it was written in Urdu, and later it was translated into English. असबाब बगावत है, पर पहले उर्दू में लिखा और फिर इसका ट्रांसलेशन किस में हो गया? इंग्लिश में। फर्स्ट इन उर्दू, देन इन इंग्लिश। नाउ व्हाट वी सी हियर, Urdu and English. In this book, what is the message, political message, that Sir Syed Ahmad Khan wants to give to the British? The political message is, Muslims, the revolt of 1857 is not a revolt, or it is not as a result of conspiracy of Muslims. ठीक है? Write this. The revolt of 1857, revolt of 1857 was not as a result of Muslim conspiracy. It was not as a result of Muslim conspiracy. ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी के कारण नहीं, it was not as a result of Muslim conspiracy. And the another message that is imbibed in the book is, Muslims are and will be always loyal. Muslims are and Muslims will be, right? The second message, Muslims are or Muslims will be always loyal. Muslims are or Muslims will be always loyal for the presence of British rule in India. दूसरा मैसेज दिया, Muslims are and Muslims will be always loyal for the presence of British rule in India. So it's company rule in India. Presence of company rule, because यहाँ पे क्या था? हाँ British rule. Presence of British rule in India. वो हमेशा किसके लिए लॉयल रहेंगे? ब्रिटिश रूल के लिए. Because in 1858 what has happened? Company has been replaced by crown. And now Sayyid Ahmad Khan is saying that we will always be loyal to the crown or crown rule. हम हमेशा किसके लिए लॉयल रहेंगे? क्राउन रूल के लिए. 1857 was not a result of Muslim conspiracy. क्यों कहा सैयद अहमद खान ने ऐसा? अब आप समझ गया ना? ये सैयद अहमद खान नहीं लिख रहा है, परिस्थितियां लिखवा रही हैं उनसे, और परिस्थितियों को पैदा किसने किया है? कंपनी ने, अपने दिमाग से. सेलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, मुस्लिम्स आर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल. मुस्लिम सोसाइटी को जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं, कुछ भी नहीं. एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास कौन है? कंपनी. एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो आपको अगर कुछ भी मांगना होगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरी हो, वो किससे मांगोगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से. और आप अंग्रेजी सरकार के खिलाफ रह के अंग्रेजी सरकार से नौकरी थोड़ी ना ले सकते. तो आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि 1857 का रिजल्ट मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट नहीं था, रिवोल्ट. और दूसरी बात बतानी पड़ेगी कि वी विल बी लॉयल टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. दो बातें इन्होंने बताई. एंड पैरेलली ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट? ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोमोटिंग दिस आइडिया अमॉन्ग द मुस्लिम ग्रुप्स कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेट करो. ओके, अपने ऑर्थोडॉक्स और सुपरस्टिशियस टीचिंग से बाहर निकलो, नहीं तो और पिछड़ जाओगे. जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नहीं. समय बदल रहा है, अब मुगल रूल दोबारा एस्टैब्लिश नहीं होने वाला है. ओके,
So in this modern administrative system, you need education. And on another side, what he will try to do? He will try to give a message to the British government that Muslims are what? Loyal to the presence of British. बिकॉज अगर मुस्लिम्स एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो जॉब कहाँ करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में. एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको रिलेट करना है. सो आफ्टर दिस सर सैयद अहमद खान डज व्हाट? Okay, he started promoting this idea. At the same time, right, he also started making efforts for bringing socio-religious reforms. Okay, he also started making efforts for bringing socio-religious reforms among Muslims, plus promotion of education among Muslims. इसके लिए कोशिश इन्होंने करनी शुरू कर दी. ओके, अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में हुआ, लेकिन इसकी तैयारी तो काफी पहले से चल रही थी ना, राइट? सो ही डिड दिस, started promoting socio-religious reform among the Muslims, and he also started promoting education among the Muslims. मुस्लिम कम्युनिटी के सामने promotion of education, ये भी चीजें शुरू हो जाती हैं. Got it? Very simple idea. Now what we see? The out, अब इसके बाद देखो, the outcome can be seen in which year? 1875. मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. क्या ये बिना ब्रिटिश सपोर्ट के बन सकता था कॉलेज? मान्यता कौन देगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट. बट इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो मैं बता दूं. ब्रिटिश गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट. ठीक है, जैसे आप बार बार कहते रहो हम आपके लिए लॉयल हैं, लॉयल हैं, लॉयल हैं, तो लॉयल्टी टेस्ट भी करवाती थी कंपनी, जैसे आजकल लोग रेडियो पर करवा लेते हैं लॉयल्टी टेस्ट. ठीक है, तो कंपनी ने वही काम किसको दिया? W, read this, W Hunter. This is an important fact for Prelims PYQ. So read this, W Hunter. यहाँ पे लिख लो W Hunter. W Hunter. ठीक है, this is an important question of Prelims. पूरा नाम है William Wilson Hunter. W Hunter means what? William Wilson Hunter. W Hunter. William Wilson Hunter. ठीक है, क्या हो रहा है विलियम विल्सन हंटर का? ओके, read this. He wrote a book in 1871. He wrote a book in 1871, and the name of this book was The Indian Musalmans or Musallamins. The Indian Musalmans. The Indian Musalmans. He wrote a book in 1871, and the book was Indian Musalmans. और उस समय ये असिस्टेंट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर था बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बंगाल में. ठीक है, और देखो ये भी बंगाल में ही है. पार्टीशन ऑफ बंगाल भी कहाँ हो रहा है? बंगाल में. सो ही वाज पोस्टेड एज एन असिस्टेंट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर. ही वाज पोस्टेड एज असिस्टेंट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बंगाल. बीरभूम इन बंगाल. ही वाज पोस्टेड एज एन असिस्टेंट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर. बीरभूम में था. तो गवर्नमेंट आस्क्ड हिम, गवर्नमेंट ने इससे पूछा था कि भाई ग्राउंड रियलिटी बताओ, थोड़ा स्टडी करो. अब स्टडी करवर के फिर हमें ये बताओ, तुम्हारा काम ये बताना है कि वेदर द इंडियन मुस्लिम्स आर स्टिल हैविंग द सेम मेंटालिटी ऑफ डूइंग जिहाद अगेंस्ट द क्वीन. क्या अभी भी उनकी मेंटालिटी है? इसका मतलब पहले ये मेंटालिटी थी. इससे ये पता चलता है, जिहाद का मतलब ये भी है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जब अंग्रेजी सरकार से नाराज हुआ तो उस नाराजगी को दिखाने के लिए और विरोध करने के लिए उसने जिहाद वर्ड का यूज किया. तो जिहाद के कई सेंस हैं. मेरी बात समझ गया ना? सो ही वाज गिवन द टास्क. सो राइट दिस, दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज आस्क्ड W Hunter to examine has asked W Hunter to examine that, okay, examine that, okay, whether Indian Muslims are still having, whether the Indian Muslims are still having, whether they are still having the same sense of jihad or rebel, same sense of jihad or rebel against the queen, whether they are having the same sense of jihad or rebel against the
क्वीन। क्या क्वीन के खिलाफ उनके दिमाग में अभी भी जहर है, वो जिहाद है, वो रिबल है? ही वॉज आस्क्ड टू एग्जामिन करने को कहा। तब इसने अपनी बुक लिखी, कहा कि बुक रिपोर्ट सबमिट करके इसने क्या किया, बुक ही लिख दिया। ही जस्ट कलेक्टेड ऑल हिज आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ दिस बुक, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर 1871। और इस बुक में वो क्या कह रहा है, राइट दिस 1857 कह रहा है, इट वाज, यस, इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ मुस्लिम्स, ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी। ही सेज दैट यस, it was a conspiracy of Muslims. Then he says that in 1871, in 1871, in 1871, right, majority of the Indian Muslim class, majority of Indian Muslim class has rejected the idea of doing a revolt against the British government. 1871, majority of the Indian Muslim class, majority of the Indian Muslim class has rejected the idea, has rejected the idea of doing revolt against British government. Majority of the Muslims class in India has rejected the idea of doing revolt against the British government. Right, one more point. It means now they are the loyal supporters for the presence of British rule in India. इसने रिपोर्ट फाइनल लगा दी that now Muslims are the loyal supporters for the presence of British rule in India. Now Muslims are the loyal supporters for the presence of British rule in India. डब्ल्यू हंटर की रिपोर्ट मायने रखती है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। इसने क्या कहा कि अब मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। तो खतरा नहीं है तो अब क्या करो, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करने में मदद करो, एजुकेट करो और उनको एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाओ, उनको एम्पावर करो और उनको एम्पावर करके इन फ्यूचर किसको कमजोर करने के लिए यूज करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर से डिवाइड एंड रूल। मेरी बात समझ गया ना, ये है ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है। तो देखो कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, दिस इज कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी, गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी, ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी। देखो अगर आप किसी के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो और आपकी साजिश का पता उसको पहले से है कि आप क्या कर रहे हो, तो वो साजिश किस काम की साजिश, ठीक है। If you are planning a conspiracy against someone and he already knows that you are conspiring, ठीक है, तो बड़ा खिलाड़ी कौन हुआ, ठीक है। वो आपको खेलने दे रहा है कि ठीक है बेटा, ठीक है, जो कर रहे हो करो, ठीक है, हमें तो बस देखना है कहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। तो कंपनी जो थी ना, कंपनी की मेंटालिटी यही थी, ओके। दे वर प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। उनको हिंदुस्तान बने, एक नेशन बने, पावरफुल बने, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कभी ऐसा इंटेंशन नहीं। देयर बेसिक पर्पस वाज हम इंडिया में कैसे बने रहे और हम इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कैसे कर सके, ये उनका मेन टारगेट था। नाउ दिस विल हैपन। अब देखो ईयर्स 1871 में रिपोर्ट बुक आई डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की, एंड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टैब्लिशमेंट इन विच ईयर, 1875। अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड विच ईयर, AMU, AMU comes which year, 1920. It means from this period onwards we see that the British will start giving some patronization to the Muslim class. मेरी बात समझ गया ना। और इस मुस्लिम क्लास, ठीक है, के साथ अगला इनका स्ट्रेटजी क्या होगा, तो देखो what they will do. Again I am drawing a sketch but I will discuss in detail later in the Indian nation movement. देखो what will happen 1905 to 1908. Yes, 1907-08 we see what, स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया, स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया। और फिर स्वदेशी मूवमेंट में क्या है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उनको फिर से दिख गई हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उनको बहुत खतरा लगता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दैट इज नॉट गुड फॉर देम, so they will try to break the unity. So what will happen, this concept I will discuss later. 1906 all India Muslim League was formed, okay. This was a party, okay,
ऑफ मुस्लिम्स ओनली। ये केवल किसकी पार्टी थी? मुस्लिम्स की। ओके, पार्टी ऑफ मुस्लिम्स ओनली। और इधर जो 1885 में हमने पार्टी बनाई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वाज ऑल क्लास पार्टी। इट वाज ऑल क्लास पार्टी, ऑल क्लास पार्टी। And now what will be the target of Muslim League? Muslim League will say that we are the party of Muslims and INC is the party of Hindu. मतलब इनका टारगेट ही था कि उसको क्या प्रूव कर दो? हिंदू पार्टी। मेरी बात समझ गया ना? वाई INSC वॉज सेटअप एज एन ऑक्सिलरी प्लेटफॉर्म, बताया था ना क्लास में, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, लास्ट क्लास में 1887। ये रीजन था एग्जैक्टली कि अलग प्लेटफॉर्म, नहीं तो क्या करेंगे? ठीक है, ये तो खैर बाद में आई, बट ये खतरा हो सकता था। INC was knowing this from the very beginning. So this is 1885 all class party, and 1906 is what? Party of, okay, Muslims. And Muslim party, right? This Muslim League will try to label INC as a Hindu party. और इस पार्टी को बनवाया किसने था? ब्रिटिश। फंड किसने दिए? ब्रिटिश। डोनेशंस किसने दिए? ब्रिटिश। And then again, I will discuss later in Indian National Movement 1909 and SES for Muslims issue in 1909. SES for the Muslims, separate electorate system for the Muslims. This is also known as teeth of communal dragon in India. Teeth of communal dragon in India. Teeth of communal dragon in India. So these events I will relate later. बट जब वो पढ़ाऊंगा तो ये पीछे वाला पर्सपेक्टिव याद रखना। गॉट इट? ओके, समझ में? टीथ ऑफ कॉमनल ड्रैगन इन इंडिया। हाँ, 1909, this is SES for the Muslims, separate electorate system for the Muslims, and this is also known as teeth of communal dragon in India. इसको बाद में डिस्कस करूंगा। When I will come to the national movement, I will discuss these points. So you will have to do correlate करना होगा, because whenever the question will be asked, you are going to address a main theme in the GS Maths question. पूरा का पूरा एक कंप्लीट थीम होगा, तो जब आप समझोगे यू कैन इजीली राइट द आंसर। ठीक है, जो भी मॉड्यूल पढ़ रहे हो, जो भी मॉड्यूल सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ स्टडी पार्ट, सेलेक्ट वन मॉड्यूल, सेलेक्ट वन चैप्टर, डेवलप गुड कमांड ओवर दैट चैप्टर। खत्म नहीं करना है जल्दीबाजी में। इफ यू विल डू दैट, द सिलेबस विल नेवर कम टू एन एंड। यू विल फिनिश द बुक बट यू विल गेन नथिंग। ठीक है, एक एक चैप्टर को टारगेट करना है। Read it, discuss it, read PYQ, try to write the answers, discuss the chapter with your friends, ठीक है, and then enter into the second chapter, then enter into the third chapter. ये होता है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। गॉट इट? ओके, इस रेस में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि 21 ईयर्स में ही IAS बनना है, 22 ईयर्स में बन जाओ, 23 में बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 21 की बजाय 23 में बनोगे ना तो ज्यादा बेहतर काम करोगे। ठीक है, नहीं तो रील बनाने में सारा टाइम आपका निकल जाएगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों का निकल जाता है, IAS स्टॉप करते हैं, फिर केवल और केवल रील में नजर आते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ आई होप यू हैव गॉट दिस आइडिया। नाउ आई विल डिस्कस वन मोर पॉइंट अबाउट सर सैयद अहमद खान। राइट, सर सैयद अहमद खान, इट मीन्स सर सैयद अहमद खान gradually did what? Read this. He started advocating for protecting the rights of Muslim classes in India. Muslim classes in India. Okay, advocating for protecting the rights of Muslim classes in India. Okay, so he was just trying to, okay, promote the Muslim interests in India. Muslim interests in India. ठीक है, how to safeguard Muslims in interest in India. This he was doing. How to safeguard Muslim interest in India. This he was doing. Can we say him communalist? Yes or no? कितने लोगों को लग रहा है yes या no? He was trying to safeguard Muslim interests in India. On this basis, can we say him communalist? Yes or no? Write in chat box.
क्या होगा भाई? बाकी लोग केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही तो नहीं कर रहे हो, वीडियो नहीं ऑन कर रहे हो। ओके, गिव आंसर यस और नो। देखो, ऑन दिस बेसिस वी कैन नॉट से एनीवन कॉम्युनलिस्ट। इट इज नॉट बैड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, अ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, ये बुरा नहीं है। टुडे ऑल्सो वी डू दिस। होता है कि नहीं? आज के टाइम में भी तो ऐसा होता है दैट सपोज यू आर अ लीडर ऑफ योर कम्युनिटी, आप जाट हो और आप जाट कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो। इफ यू आर अ हिंदू फाइटिंग टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी, इफ यू आर अ मुस्लिम डूइंग सम वर्क टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, ये गलत नहीं है। ऑन दिस बेसिस यू कैन नॉट बी कॉल्ड एज कॉम्युनलिस्ट। इस बेसिस पे कॉम्युनलिस्ट कह नहीं सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर कम्युनिटी का आदमी अगर अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करे तो पूरा देश हमारा आगे बढ़ेगा। इसमें कौन सी बुरी बात है? कुछ गलत नहीं है। ओके, वी मस्ट हैव अ सेंस और द फीलिंग दैट वी आर द इंडियंस, वी ऑल आर हैविंग ओके कॉमन इंटरेस्ट। बट स्टिल, क्या आप अपने घर के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम नहीं करते हो? करते हो ना। तो घर से बना क्या? समाज। ओके, कम्युनिटी। तो ये गलत नहीं है। बट देखो प्रॉब्लम क्या हो। Sir Syed Ahmad Khan was knowing this fact very well that okay, this is a colonial rule, and he was knowing this fact very well. इसके पहले एक एग्जाम्पल था, और वो एग्जाम्पल क्या था? अमेरिका का। अमेरिका was a colony of Britain. We all know this now. America was a colony of Britain, and America got freedom from British okay colonialism. America got freedom from this British colonialism. America was a colony of Britain. America got freedom from the British colonialism. अमेरिका को तो फ्रीडम मिल गया था। तो जब अमेरिका को फ्रीडम मिला तो अमेरिका बिकेम व्हाट? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री बना। तो सर सैयद अहमद खान वाज नोइंग दिस that this is a colonial rule and one day this colonial rule will come to an end. एक दिन colonial rule खत्म होगा। And when this colonial rule will come to an end, what will happen? This might be possible that democracy will come in India. Democracy आएगा, and democracy works on which principle? One vote, okay, one person, one vote principle. One person, one vote. इसी principle पे तो काम करता है। Now what Sir Syed Ahmad Khan demanded? Sir Syed Ahmad Khan started demanding these rights from the Muslims, that sorry, from the British government, that okay, we need okay one class, one vote, one class, one vote, one class, one vote. Is it proper and adequate demand? No, it's improper and inadequate demand. ये डिमांड थी सर सैयद अहमद खान की। इट वॉज इम्प्रॉपर एंड inadequate डिमांड। अब इसका मतलब कैसे समझोगे? वन क्लास वन वोट, फॉर एग्जाम्पल हिंदू क्लास इज इक्वल टू वन वोट, मुस्लिम क्लास विल हैव वन वोट। आप बताओ, हु इज इन मेजोरिटी नंबर्स? हिंदूज। हु इज इन माइनॉरिटी नंबर? मुस्लिम। So this is against this principle or belief of one person, one vote. You are asking for one class, one vote. क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्रांस वाला टॉपिक रिपीट हो रहा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यही तो था, वन क्लास वन वोट। नोबिलिटी क्लास को वन वोट, प्रीस्टली क्लास को वन वोट। ओके, सो दिस इज व्हाट? प्रॉपर एंड एडिक्वेट डिमांड। दिस इज व्हाट? improper and adequate demand. So if you will raise this demand, what will happen? On this basis you are a communalist. यहाँ पे आप कम्युनलिस्ट हो गए, ये चार्ज आप पे लग सकता है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डिमांड। और यहीं पे गलती की सर सैयद अहमद खान। इन्होंने एक डिमांड की जिसका नाम हो गया इम्प्रॉपर एंड इनएडिक्वेट डिमांड। लेटर व्हाट विल हैपन? मुस्लिम लीग विल डू व्हाट? मुस्लिम लीग विल डिमांड फॉर SES फॉर मुस्लिम्स, SES फॉर द मुस्लिम, सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स। क्या था सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम? जैसे मान लो कि ये इंडिया है और पूरे इंडिया में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी। मुस्लिम्स क्या है? माइनॉरिटी। सपोज दीज आर सम सेलेक्टेड पॉकेट्स और टेरिटरीज वेयर
मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी, मान लेते हैं यहाँ पे मुस्लिम्स क्या है, मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी. So what is the demand of Muslim League? Ki the areas where Muslims are in majority, these selected pockets should be treated as separate electorate. इनको एक विशेष दर्जा मिलेगा. They are different from the regular electorates. They are what? Separate electorates. In context of India, Muslim class is minority class. But in some selected pockets, जो आगे चल के क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया, वहां पे मुस्लिम्स क्या थे, दे आर इन, मुस्लिम्स वहां पे क्या है, दे आर इन मेजोरिटी, वहां पे वो मेजोरिटी में. तो दे आर आस्किंग दैट दीज सेलेक्टेड पॉकेट्स वेयर मुस्लिम क्लास आर इन मेजोरिटी, दे शुड बी मेड सेपरेट इलेक्टरेट्स एंड देयर मुस्लिम्स विल गेट प्रिविलेजेस. और वो प्रिविलेजेस क्या है, ओके, इन इलेक्टोरल रोल्स देयर विल बी द नेम ऑफ मुस्लिम वोटर्स ओनली, देयर विल बी मुस्लिम कैंडिडेट्स ओनली. ओके, तो बताओ इस तरह की जो डिमांड है, इज इट प्रॉपर एंड एक्यूरेट एडिक्वेट डिमांड? नो, बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, बट यहाँ पे माइनॉरिटी में अदर माइनॉरिटीज भी तो है भाई, ठीक है, यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी भी तो हो सकता है. सो दिस डिमांड इज व्हाट, इम्प्रॉपर एंड इनएडिक्वेट डिमांड. तो ये इम्प्रॉपर एंड इनएडिक्वेट डिमांड जो बाद में आया सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के रूप में, ठीक है, एग्जैक्टली ये सर सैयद अहमद खान की डिमांड नहीं थी, बट हु स्टार्टेड such kind of demand, improper and inadequate demand for the Muslim class in India? Sir Sayyid Ahmad Khan. He started this. One class, one vote. It was not given. इसका कभी practical implementation नहीं हुआ. This was the demand of Sir Sayyid Ahmad Khan only. But what we say, that the same mentality is reflected in the demands of Muslim League also. When Muslim League demand for separate electorate system, it is again what? A kind of improper and inadequate demand for the Muslims. Inadequate demand for the Muslim. He demanded what? One class, one vote. This was not realized. ये नहीं हुआ. But here Muslim League demand SES for the Muslims. This was later realized. ये आगे पूरा हुआ. So सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? वो जमीन तैयार कर दी, जिसमें एक माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने लिए क्या मांग करेगी? इम्प्रॉपर एंड इनएडिक्वेट डिमांड. इससे दूसरी माइनॉरिटीज को भी क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा कि हमें भी यही डिमांड करनी चाहिए. दलित्स विल आल्सो डिमांड, अदर माइनॉरिटीज विल आल्सो डिमांड. इससे क्या होगा? इंडियन सोसाइटी कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा. और जब इंडियन सोसाइटी कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, सो हु विल गेट द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द सिस्टम? इसका फायदा किसको मिलेगा? ब्रिटिश को. दिस इज व्हाट देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. गॉट दिस आइडिया? यही तो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. तो आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में. When I will discuss national movement, I will again connect the things. So the basics is clear. Okay. Is it proper to say Sir Sayyid Ahmad Khan communalist? We will say that to a large extent he was not a communalist. आपका अप्रोच कंक्लूजन बहुत मायने रखता है. अगर आप सीधे लाठी मार अप्रोच में लिखोगे कि yes he was communalist, ऐसे नहीं होता है. You will say that to a large extent he was not a communalist because he was fighting to protect the rights of Muslim groups in India. Okay, और सारी बातें लास्ट में आप बताओगे. बट इन वन सेंस where he demanded what? One class, one vote for the Muslims, which was not accepted or which was not realized. Okay, so in that limited sense he was communalist. Okay, two. Okay, communalist in some limited way. To certain extent he was communist. To certain extent. तो हमने क्या किया? पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं किया, पूरी तरह से डिनाई भी नहीं किया. So this conclusion is very much important, and that's why UPSC generally asks questions like, in your opinion, what do you think? क्यों पूछते हैं ऐसा? क्योंकि आपको समझ है कि नहीं. तो समझने में देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना. If you will develop understanding, it will take time. Otherwise ये टॉपिक फिनिश करने में कितना लगेगा? 10 minutes. इससे ज़्यादा थोड़ी नहीं लगेगा. तो that's why we need some time. ठीक है, बिकॉज ये चीज़ें फिर कनेक्ट होंगी. फिर पूरी हिस्ट्री में आपको समझ में आएगा कि भाई कॉम्युनलिज्म का सेंस डेवलप कैसे हुआ, इंडिया में पार्टीशन कैसे हुआ, मुस्लिम लीग का क्या रोल था. ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ग्रेजुअली हमें सीखनी होंगी. वी विल हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग. नाउ दिस पार्ट वी हैव completed. Now we are going to enter into the third part. Write this: reforms in Parsi society.
हियर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ओनली। तो जो टॉपिक जिसलिए इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। रिफॉर्म्स इन पारसी सोसाइटी, रिफॉर्म्स इन पारसी सोसाइटी, ओके, राइट, प्रीलिम्स ओनली, reforms in Parsi society, prelims only. This topic is for prelims only. And here only one organization that we need to know, that is that has already been asked in your exam. पूछा ही जा चुका है. Read this RMS. This is रहनुमाई 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 मजदयासन सभा, रहनुमाई मजदयासन सभा. This is only one topic. रहनुमाई मजदयासन सभा. It was founded in Bombay and the year was 1851. Rehnumai Mazdayasan Sabha, founded in Bombay and the year is 1851. Okay. This is what? A reform organization, Socio-Religious Reform Organization of Parsi community in India. Parsi community in India. Parsi communities were already, right, an advanced community. मेरी बात समझ गया ना? तो यहाँ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी. Okay, there was not much more problem, but still, read this. Okay, right. There were some evils, and they needed to be discarded. कुछ evils थी. Okay, और वो evils क्या थी? Right, point one. Right, complex and complex ceremonies. Complex ceremonies. Sorry, complex rituals in ceremonies like marriage and funerals. Complex ceremonies, complex rituals in ceremonies like marriages and rituals, marriages and funerals. ठीक है, right? Next point, right? Okay. There were different laws of inheritance and marriage which were creating problems or challenges. There were different laws of inheritance and marriage which were creating problems or the challenges. Different laws of inheritance and marriage. तो वो लॉ भी क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए, सिंगल एंड यूनिफॉर्म लॉ. तो वहां पे लिख लेना एरो मार्क देके कि द पारसी कम्युनिटी नीडेड अ सिंगल एंड यूनिफॉर्म लॉ, सिंगल एंड यूनिफॉर्म लॉ, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर दिस पर्पस. इसलिए था कि जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हैं उनसे पीछा छुड़ाया जाए. दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इविल. और इनहेरिटेंस से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड एक कॉमन लॉ हो, यूनिफॉर्म लॉ हो, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन था, राइट? एंड इट वाज ऑलरेडी एन एडवांस कम्युनिटी, सो देयर वर नो सच बिगर प्रॉब्लम्स. बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं थी, राइट? द फाउंडर्स ने, एंड दिस इज द क्वेश्चन, this is the question of prelims exam, founders name. So right, okay, one name is Nauroji Fardonji, Nauroji Fardonji, Nauroji Fardonji. The second name is, right, okay, S.S. Bengali, S.S. Bengali, S.S. Bengali. The third name is, okay, Dada Bhai Nauroji. The third name is Dada Bhai Nauroji. And the fourth name is K.N. Kama. K.N. Kama. These are the four names. Nauroji Fardonji, S.S. Bengali, Dada Bhai Nauroji, okay, and K.N. Kama. Okay, these are the names. और यहाँ पे एक और लिख लो, okay, Dada Bhai Nauroji and K.N. Kama started, okay, a newspaper, that is Anglo-Gujarati newspaper. Read this. They started a newspaper, that is Anglo-Gujarati newspaper, and the name of this newspaper was Rast Goftar. Rast Goftar. So this is also a prelims question, important prelims question. The name of this newspaper was Rast Goftar. Okay, and this organization was formed in the year 1851. Rehnumai Mazdayasan Sabha. This organization was formed in the year 1851. Got it? So these are some of the important
reforms in Parsi society. Now write next, reforms in the Sikh society. Reforms in Sikh society. Reforms in Sikh society. Sikh society. So देखो, we all know that Sikh religion was what? It was a part of Bhakti and Sufi movement. ठीक है, तो सिख रिलीजन अपने आप में क्या था? It was a symbol of social, cultural, and religious revival. It was a symbol of social, cultural, and religious revival. But gradually, many evils became a part of this religion. Gradually, many evils became a part of this religion. Okay. And what are those evils? Right. For example, point one. कौन से evils है? Point one. Complex rituals in the marriages. Complex rituals in the marriages. Right. Point one. Expensive form of marriages. Expensive form of marriages. Expensive form of marriages. Okay. Expensive form of marriages. Right. Next point. Okay. Corruption in gurudwaras, or you can write certain gurudwaras where okay, next point, certain gurudwaras were in the control of corrupt mahants. Certain gurudwaras have become in the control of corrupt mahants. ठीक है, corrupt mahants. Right. Next point, misuse of properties of gurudwara. Misuse of properties of gurudwara. Misuse of properties of gurudwara. Right. Next point, immoral activities in the campuses of gurudwara. And this will happen gradually. Immoral activities in the campuses of gurudwara. Okay. Got it? Okay. Right. Next point. Okay. Promotion of rituals among the Sikh by the corrupt mahant. Promotion of rituals among the Sikh by the corrupt mahant. Promotion of rituals among the Sikh by the corrupt mahants. Got it? Okay. And what is this? This is all evil. Gradually it was becoming a part of Sikhism, and Sikhism will not tolerate this. ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा, because it was already a very simple form of religion promoted by Guru Nanak, और ये तो एक तरह से मूवमेंट था, ये एग्जाम्पल दिया जाता है इसका. So obviously many reform movements will start to get rid of these practices. So at this, many reform organizations were formed and movements started. Many reform organizations were formed and movements started to get rid of these practices. To get rid of these practices. Right. Example number one. Nirankari movement. Right in bracket, Punjab region. Nirankari movement, Punjab region. Right. Next example, नामधारी और कूका मूवमेंट, पंजाब रीजन. ये सब रीजन क्या हो जाएगा? पंजाबी तो होगा ना. नामधारी एंड कूका मूवमेंट, पंजाब रीजन. एंड राइट हियर इंपॉर्टेंट नेम्स. यहाँ पे कौन लोग रिफॉर्मर्स एसोसिएटेड है नामधारी और कूका में? इश्यूज विल बी द सिमिलर, नामधारी और कूका में. राइट इंपॉर्टेंट नेम्स, भगत जवाहर मल. राइट. बालक सिंह, बाबा राम सिंह, एक्सेट्रा. भगत जवाहर मल, बालक सिंह, बाबा राम सिंह, एक्सेट्रा. बालक सिंह, बाबा राम सिंह, एक्सेट्रा. राइट. नेक्स्ट. ओके. सिंह सभा मूवमेंट. अगेन अमृतसर रीजन. सिंह सभा मूवमेंट, अमृतसर रीजन. ठीक है, अमृतसर रीजन. राइट. नेक्स्ट इज अकाली मूवमेंट. और
गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, अकाली मूवमेंट और गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, अकाली मूवमेंट और गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, गॉट इट, अकाली मूवमेंट और गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, ब्रैकेट में लिख लेना 1920-25, 1920-25, and read this. After this movement, after this movement, Punjab government, after this movement, Punjab government introduced Sikh Gurudwara Act of 1925. Sikh Gurudwara Act of 1925, in which the community was given, in which the Sikh community was given the right to manage Gurudwaras. मतलब इंडिविजुअल करप्ट महंस का कब्जा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. The Sikh community was given the right to manage Gurudwaras. सिख कम्युनिटी को यह अधिकार दे दिया गया, गॉट इट, एंड इन दिस वे द unwanted and undesired control of, and in this way the unwanted or undesired control of corrupt mahants came to an end. In this way the unwanted or undesired control of corrupt mahants will come to an end, got it. Unwanted and undesired control of corrupt mahants will come to an end. This is all. Okay, now one topic I will discuss later. ठीक है, आगे जब मैं आपको नेशनल मूवमेंट पढ़ा लूंगा, when I will discuss Ambedkar and all this, clear? So I will discuss that how the kind of consciousness, okay, you can say that how the lower class, so-called lower class, or the Shudras, lower caste movement, temple entry movement, Gandhi, Ambedkar, and all the Dalit issues and their movements I will discuss separately, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से जानना बड़ा जरूरी है. मेरी बात समझ गया ना, कि इन इंडिया व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द दलित मूवमेंट्स, क्या रहा है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम ईवी रामास्वामी नाइकर in south, what was the temple entry movement, right, which villages were called agrahar, why the Shudras were not allowed to enter into the temples, or the outcasts not allowed to enter into the temples, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, because that part will be very much important for writing essay also, ठीक है ना. और उसको थोड़ा सा मैं पोस्ट मॉडर्न 1947 के बाद से भी कुछ चीजों को जोड़ दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह से पढ़ा के, ठीक है. तो आपका पूरा वो अप्रोच जो होगा ना वो क्लियर हो जाएगा. सो दिस विल नॉट बी ओनली जीएस पेपर 1. आपको मार्जिनलाइज क्लास पढ़ना है ना, सोशल जस्टिस, वहां भी पढ़ना है, दलित्स एंड ऑल दिस, तो चीजें कनेक्ट होती हैं, ठीक है ना. तो उसको भी करेंगे. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट, बट बिफोर ये, यस प्लीज. कुका, के यू के, देखो एक वर्ड है कुकी, कुकी ट्राइब है, कुका क्या है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना, कुका एंड कुकी, कुकी मीन्स व्हाट, इट इज अ ट्राइब, तो ट्राइबल मूवमेंट में कुकी आएगा, ठीक है, यहाँ पे कुका है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू, अच्छा बिफोर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, let's discuss one more topic, that is in social policy one most important part is education policy, because when we are discussing socio-religious policies, so education policy we must discuss, clear. So with GS perspective I am going to discuss this topic, education policy, clear. Now I will ask you a few questions, that again you all are familiar with these three phases, पहले से ही आपको पता है, you all are familiar with these three phases. First is 57 to 1813, the second is 1813 to 1857-58, and the third is 1857-58 to 1947. Now tell me one thing, again a very common sense based question, that are British willing to promote education in India, yes or no? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं इंडियन लोगों को बहुत एजुकेट कर देना चाहिए, आर दे विलिंग? नो. Okay, so in first phase we all know that which policy they use, policy of strict, policy of non interference, we all know this. तो यहाँ पे क्या है, education, we see no such official development, कुछ efforts हैं, there are some limited efforts,
जो पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया है, एफर्ट्स ऑफ ओरिएंटलिज्म, वॉरेन हेस्टिंग्स, याद आया, कलकत्ता मदरसा, इस तरह के एफर्ट्स, ठीक है। बट ऐसा कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, नो सच ऑफिशियल पॉलिसी। सो नो सच ऑफिशियल पॉलिसी रिगार्डिंग एजुकेशन, नो सच ऑफिशियल पॉलिसी, कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं। ओके, देयर आर सम एफर्ट्स, there are some efforts, and these are the individual efforts of governors, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स का इंडिविजुअल एफर्ट है, these are the individual efforts, this is not policy कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने हेल्प कर दिया कलकत्ता मदरसा, संस्कृत कॉलेज, so that does not show the government policy, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। So here that policy is lacking. First phase, no policy, no official policy. Some facts I have already discussed with you. Orientalist, याद आया कुछ? Orientalism, Calcutta Madrasa, Sanskrit College. So these are the individual efforts. But here we see policy. ये हाँ, policy. यहाँ पे policy दिखता है, और वो policy क्या है? So by the Charter of 1813, this is a prelims question also. तो वहाँ highlight कर लेना. Write this: by Charter of 1813, by Charter of 1813, read this: the British government announced that the British government announced that it will give a grant, that is education grant. The British government announced that it will give a grant, that is education grant of 1 lakh rupees per annum. It will give a grant, that is education grant of 1 lakh rupees per annum for the promotion of education in India, for the promotion of education in India. It will give a education grant of 1 lakh rupees per annum for the promotion of education in India. 1 लाख रुपए per annum देंगे। ये पॉलिसी हुई कि नहीं? This is the government policy. But इसके बाद look at the development here. Development part, that is very interesting. 1813 this announcement was made, and read this: but the fund was not released for 10 years. Fund was not released for 10 years. ठीक है, अनाउंस कर दिया आपने, बट द फंड वाज नॉट रिलीज फॉर 10 years. फंड को 10 years तक रिलीज नहीं किया गया. द फंड वाज नॉट रिलीज फॉर 10 years. दिस शोज व्हाट? willingness of British to promote education in India, or unwillingness, they don't like. ठीक है, half-hearted effort. ठीक है, so they are doing half-hearted efforts. So the fund was released when? In this year, 1823. So read this: fund was released this year. Fund was released this year. 10 years तक the money was not released here. Fund is released in 1823. तो अब कितना पैसा रिलीज होगा बताओ यहाँ पे? 10 lakh rupees. 10 lakh rupees. The fund was released. अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये पैसा खर्चा कैसे होगा? ज्यादा पैसा आएगा तो खर्च कैसे होगा? ये भी तो सोचना पड़ेगा. Okay, the government says that it's 10 lakh rupees. How we will spend it? So the government will form a committee to give suggestion on how to spend this fund. Committee का काम क्या है? Giving suggestion on how to spend this fund. And there will be a controversy among the members of the committee. और इस controversy की वजह से कमिटी अगले 10 साल 12 साल तक अपना रिपोर्ट नहीं दे पाएगी. तो पैसा रिलीज हो गया बट वो खर्चा नहीं हो पाएगा आने वाले 10 से 12 साल. ठीक है, so write this: a committee was formed here, a committee was formed here, a committee was formed to give recommendations, a committee was formed to give recommendations on how to spend this fund. A committee was formed to give recommendation on how to spend this fund. How to spend this fund. Committee was formed to give recommendation on how to spend this fund. ठीक है, कमिटी भी बन गई. Now what is the problem here? Okay, read this: the opinion of the committee members were highly divided. The opinion of committee members were highly divided. The opinion of committee members were highly divided. What does it mean?
opinion highly divided. So देखो, the opinion were divided into two groups. The opinion were divided into two groups. Group 1 and group 2. Group 1 was saying that, okay, education in India must be given in vernaculars, right? Local traditions, local knowledge, vernaculars, local languages should be used. Okay? This is group 1. And the another group was saying that education that should be given in India should be what? English system of education. ये होना चाहिए. English system of education. It means here the medium of instruction should be English. Medium of instruction should be English. Here they are saying that medium of instruction should be vernaculars. Clear? So this group will be called what? Orientalist group. And this group, or they all are the British administrators. This group will be called Orientalist group. This group will be called Anglicist group. So there are two groups. This group will be called Orientalist group. This group will be called Orientalist group. And this group will be called Anglicist group. This group will be called Anglicist group. And the controversy between these two is called Orientalist Anglicist controversy. कितना आसान है? What is Orientalist Anglicist controversy? The controversy between the members of this committee that education, for giving education, what should be the medium of instruction? Okay, so this is called, the controversy here is called Orientalists and Anglicist controversy. Orientalist and Anglicist controversy. Okay, now in this committee a new chairman will come. New chairman will come, and the new chairman name is Macaulay. You must have heard the name of this person, Macaulay. Okay? New chairman was Macaulay. And now Macaulay will deliver a speech. A short speech is also known as minute or speech. So Macaulay will deliver a speech in 1835. And in this way, the controversy came to an end. So read this. 1835, Macaulay's minute. 1835 is what? Macaulay's minute. Minute means a speech. So read this. In 1835, Macaulay delivered a speech, and with that speech, the controversy came to an end. In 1835, Macaulay delivered a speech, and with that speech, the controversy came to an end. And this speech is Macaulay's minute. In 1835, Macaulay delivered a speech, and with this speech, the controversy came to an end. And this speech is called Macaulay's minute. और मैकॉले उसने स्पीच में कौन सी ऐसी बात कही थी? तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन मैकॉलेज मिनट. कौन सी बात थी? राइट, पॉइंट 1. देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन मैकॉलेज मिनट. पॉइंट 1, राइट. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन will be English. Medium of instruction will be English. Medium of instruction will be English. And the second point is what? Downward filtration theory. This is the second important point that he shared in his speech. Downward filtration theory. One is medium of instruction will be English, and the second is downward filtration theory. इसका मतलब अब फंड खर्च होगा. Fund was released in 1831. Until 1835, there is no any progress. What does it show? Does it show the willingness of British to promote education in India? The answer is no. Now, what is this downward filtration theory? Again, it is a prelims question. In PYQ, you will get this question. Downward filtration theory. Downward filtration theory. Filtration theory. This is very easy to understand. देखो, in administration also there are two approaches.
One is top down and the second is bottoms up strategy. टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम्स अप स्ट्रेटजी. बॉटम्स अप स्ट्रेटजी में आप सबसे पहले किसकी नीड्स का ध्यान रखते हैं? फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग पॉलिसी. एग्जैक्टली. सो इफ यू आर हैविंग दिस बॉटम्स अप स्ट्रेटजी, सो यू विल फर्स्ट टेक केयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कि इस पॉलिसी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा गरीब लोगों पे क्या पड़ेगा, एंड देन यू विल डिजाइन योर पॉलिसीज लाइक दैट. यहाँ पे ये पॉलिसी क्या है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन. दिस इज टॉप डाउन अप्रोच. This is based on this top down approach. And what is this top down approach? So देखो top down approach क्या है? Okay, this is urban areas. Okay, urban areas. और urban areas में भी ये क्या है? Metropolis. Okay, metropolis, big cities, big cities. Or the urban areas like Calcutta is what? Big city. Like Bombay is what? A big city. Madras is what? Big city. So these are the metropolis, bigger urban centers. Then comes what? Okay, smaller urban centers. Then comes what? Smaller urban centers. Then comes what? Rural areas. Semi-urban, हाँ मतलब ऐसे semi-urban. You can write block semi-urban. Rural areas, there can be different categories. Semi-urban. Then rural areas. And what is the objective? That we will set up universities, big universities and college, or the schools where? In metropolis, bigger urban centers. And medium of instruction will be English. In this way, one class among Indians, which is the elite class, will get the opportunity to get education. And once that elite class will get educated, the benefits will ultimately reach to the smaller urban, semi-urban or the rural areas. मेरी बात समझ गया ना? दिल्ली में रहने वाला आदमी जब पढ़ लिख लेगा तो फिर आगे देखेंगे, हो सकता है इसका कुछ इम्पैक्ट किस पे आ जाए, मथुरा पे भी आ जाए, आगरा पे भी आ जाए. मेरी बात समझ रहे हो? व्हाट आई मीन टू से? इट मींस द फोकस विल नॉट बी ऑन द ग्रासरूट लेवल एजुकेशन. द फोकस विल नॉट बी ऑन गिविंग एजुकेशन इन द वर्नाक्युलर्स. एजुकेशन किस में देना है? इंग्लिश में देना है. Educational institutes will be set up in the bigger urban centers of the areas, and the main focus of this policy is to promote education among this elite class. Elite class में education को promote करना है. And it is expected that once the education will be promoted in these urban centers and among the elite class, so the benefits will ultimately reach at the grassroots level. The benefits will ultimately reach at the grassroots level. इसका benefit कहाँ तक पहुँचेगा? Grassroots level तक धीरे धीरे इसका benefit पहुँचेगा. The benefit will ultimately reach to the grassroots level. It means what is neglected here? Mass education, right? This neglection of mass education. Neglection of mass education. Neglection of vernaculars. Vernaculars are neglected here. Mass education is neglected here. Focus is on primarily educating the elite class, and it was expected that gradually the benefits will reach to the lower classes. The benefits will reach to the, okay, you can say the grassroots level. So this theory is called what? Downward filtration theory, and it is what? Macaulay's outlook. So medium of instruction will be what? English. Okay. Now Macaulay believes that if we will be capable of doing this, okay, so this British policy will be helpful in developing a class of Indians who will look like Indians. They will be, by blood they will be Indians, but by their thought, by their manners, by their beliefs, they will be the British. And when they will be like British, they will support the like-minded rule, they will support the presence of British rule in India. Got it? And he was a racist also. Macaulay believes that, okay, one single library, one single almirah, one single shelf of that almirah in Europe contains more knowledge than the entire knowledge of Asia and India. मतलब इतना ज़्यादा आगे बढ़ के वो सोचता था. That is what Macaulay's approach or outlook. In next class I will discuss the policy here. कि इसमें Woods dispatch या Hunter कमीशन और ऐसे चलते चलते हम
सैडलर तक जाएंगे. सो वी विल डिस्कस ऑल द अप्रोच इन द नेक्स्ट क्लास. तो वन पार्ट विल बी कंप्लीटेड, दैट विल बी द एजुकेशनल पॉलिसी. ठीक है ना. तो कल की क्लास में कंप्लीट हो पाएगा. दिस इज नॉट कंप्लीट लेक्चर, तो विल डिस्कस टुमारो. अब आप समझ पाए टाइम क्यों लगता है क्लासेस में. This is the reason, because but if you give time or the teacher will give time. So if you do preparation, if you do classes for one time, आपकी फाइनल प्रिपरेशन हो जाएगी. बट वहां पे टाइम कटौती जैसे होनी शुरू हो जाएगी, चैलेंजेस आपके सामने बढ़नी शुरू हो जाएंगे. ठीक है. और वो चैलेंजेस ज्यादा किस लिए होती है, उसके बाद अब आप सोचते हो कि जो छूटा उसका राइट कंटेंट क्या हो, कोचिंग के कंटेंट में प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. कि कोर इश्यूज उठा के लिख दिया गया उसमें, जो याद नहीं हो पाता है, बिकॉज द सेंटेंसेस आर नॉट कंप्लीट. बुलेट फॉर्म में चीजें आपको तभी याद होती है व्हेन यू राइट पॉइंट्स इन एन इंडिकेटिव मैनर. जैसे कल हम प्रैक्टिस कर रहे थे, आप वो इंडिकेटिव मैनर के पॉइंट्स को तभी समझ पाओगे जब पहले से उस पूरी थीम को समझते हो. मेरी बात समझ गया. दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, रिटेन द फैक्ट. मुश्किल हो जाता है बिकॉज यू डोंट कनेक्ट द थिंग्स. तो वो जर्नी कितनी लंबी हो जाती है सोचो. गॉट इट. चलिए, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस 3:30 to 5:30. ठीक है. तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास होगी एज यूजुअल. राइट. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. यस प्लीज आस्क. हाँ, उसको थोड़ा सा क्या है ना कि वो L1 L2 वाले फॉर्मेट में अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है. प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है. ठीक है. मतलब व्यूअर्स नहीं आ रहे हैं. ठीक है. और जैसे व्यूअर्स तो आएंगे. ठीक है. अपलोड जैसे मैं फ्री में अपलोड करने का जब आइडिया लेके आता हूँ सारा, तो कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं नहीं नहीं यू शुड नॉट डू दिस, है ना. तो मुझे कबीर का वो दोहा याद आता है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रो आपने आ जाओ मेरे साथ. ठीक है. आओ सब फ्री में डालते हैं. राइट. ओके. तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सिस्टमेटिक वे में उसको करूँ, कि थीम वाइज करूँ. राइट. तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके बाद वो अपलोड हो जाएगा. राइट. यू विल गेट थीम वाइज. जैसे नाजिज्म होगा, तो द थीम विल बी द नाजिज्म. इन दिस वे यू विल गेट द वीडियोस. आपने क्लास तो की है ना वर्ल्ड हिस्ट्री की. अच्छा. तो उसमें थीम वाइज आएगा. ऑब्वियसली मुझे लगता है 60% ही कंटेंट आ पाएगा. ठीक है. क्योंकि इससे खतरा मुझे नहीं है दूसरे टीचर्स को जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्योंकि ये वीडियो जब ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगी ना, तो फिर हिस्ट्री लोग कोचिंग में पढ़ना बंद कर देंगे. मुझे पता है. ठीक है. इतना बेहतर समझ में आएगा. और मेरे लिए खतरा इसलिए नहीं कि हिस्ट्री खत्म करने के बाद मैं दूसरे मॉड्यूल पे आऊँगा. ठीक है. फिर तीसरे मॉड्यूल पे आऊँगा. सो आई एम गोइंग टू डू दैट. वी विल डू दैट. तो थोड़ा पेशेंस रखिए. हाँ, 60-70% कंटेंट यूट्यूब पे रहेगा, बट ऑर्गेनाइज वे में L1 L2 L3 इस तरह से जो है ना, वो वीडियो कोर्सेज के रूप में आएगा. एंड डोंट वरी, आप लोगों को पे नहीं करना पड़ेगा. जो मेरे साथ लाइव इंटरेक्टिव जुड़े हैं, मैं फ्री एक्सेस दे दूंगा, बट वंस व्हेन दे विल बी अपलोडेड ऑन माई ऐप. ठीक है ना. तो आप लोगों को मैं फ्री एक्सेस दे दूंगा. ठीक है ना. तो देखो हमारे केस में उल्टा है. रिकॉर्डेड लेक्चर्स पेड है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आर फ्री, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आता है. ठीक है. when I do interact, when I teach, so this is a kind of passion for me. ठीक है ना. That's why. ठीक है. चलिए शाम को मिलते हैं. ओके. थैंक्स ऑल. वेलकम.